Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we're watching Chupke Chupke, and this is part 3. So if you haven't watched part 1 or part 2 and you're wondering... You just need to go to the description below, find the link there, go and watch those 2 parts, and then come back here and watch the rest of it. We'll be all caught up, everything will make sense. And if you like these videos and you want to see more videos like these, then please be sure to subscribe, turn on all notifications, और like button पर थप्पड़ मारो. क्या हुआ दीदी? नीचे जीजाजी परेशान है और यहाँ तुम? क्या कल रात प्यारे मेरे कमरे में आया था इसलिए? जी. क्यों आया था तेरे कमरे में वो? नीचे जीजाजी प्यारे से यही पूछ रहे हैं. उन्हीं से पूछ लेना. मैं तुझसे पूछ रही हूँ. मैं नहीं बताऊँ. क्यों? सुमी, ये क्या हो रहा है? प्यारे मोहन ने जो रात की घटना आपको बताई है, वो जरा दीदी को सुना दीजिए. अगर प्यारे मोहन ने बेवक्त आकर तुम्हें परेशान किया था, Yeah, right. कम से कम सुबह आकर तो हमें बताना चाहिए था. मैंने इसलिए नहीं बताया, इस मामूली सी बात को बताना इतना जरूरी नहीं समझा. देख सुलेखा, ये सब अच्छा नहीं लगता. कल परिमल ने तुझे इस तरह ड्रामे में देखा है दीदी. परिमल यहाँ आ जाए, उसके सामने जो जी चाहे करना. उसके यहाँ आने तक ये सब इस घर में नहीं चलेगा. They have like a calendar counting down till he Yeah, comes. really. Like, why is he not here anymore? Like, needs to get here quick. Are they eloping? Oh my goodness. Oh, I thought that was gonna bang. for Yeah, some so reason. did I, but it just swung wild. सत्यानाश हो गए. सुलेखा. क्या हुआ सुलेखा को? दीदी, तुम्हारी चिट्ठी पढ़ने से मैं तुमसे बहुत दूर जाती हूँ. ये क्या किया इसने? करो ना, जल्दी कुछ करो. पता नहीं कहाँ गई होगी वो. तेरे घरों में देखता हूँ. यार लेटर बॉक्स में कोई चिट्ठी रख कर. किसकी चिट्ठी? प्यारे मोहन की. जय बजरंगबली. पूजनीय मेरे साहिब. आज उषा काल में सुलेखा जी को घर से जाते देखकर मैं बहुत चिंतित हुआ. जानने की बहुत चेष्टा की, परंतु वे नहीं बोली. स्थान भी नहीं बताया. इसलिए मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ. कि यात्रा समाप्त होने पर मैं उनके समाचार सहित आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा. चलो अच्छा हुआ. कम से कम अकेले तो नहीं, किसी आफत में तो नहीं पड़ेगी. पढ़ने की जरूरत क्या है? आफत तो साथ ही गई. Right. Yeah, that's his feeling. Yeah, I mean, she just forgot too quick. क्या है? तार आयला है. दिखाओ. दिखाओ या पढ़ के सुनाओ. अरे दिखाओ. Oh, maybe that was just to get to him? इलाहाबाद से आया हूँ. वहीं से हे भगवान, परिमल ना आए. आ रहा है. हरिपत भैया के साथ और आज ही. क्या कहेंगे उसे? अरे कहना क्या है? मैं तो सच सच कह दूंगा कि तेरी बीवी भाग गई ड्राइवर के साथ. देखो रो नहीं. Gonna blame him. Blame the messenger. Let's elope too. That's a good plan. कल रात परिमल के एक दोस्त ने फोन किया था कि भैया और परिमल आज 11:20 की गाड़ी से पहुंच रहे हैं. टेलीग्राम का आजकल कोई भरोसा नहीं ना, इसलिए ट्रंक कॉल करवाया है. अभी अभी टेलीग्राम मिला है, मगर सुबह सुबह एक बहुत ही बुरी खबर मिली. क्या हुआ? परिमल आ रहा है और इधर सुलेखा ना जाने कहाँ चली गई है. He says it's so sad too. लड़की वो भी अकेली? नहीं 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 नहीं, अकेली नहीं, साथ में प्यारे मोहन भी है. मतलब वो ड्राइवर? हाँ वो भी क्या बिना इजाजत के? हाँ प्रशांत. Oh, yes. तो आ ही गया ना, इसमें घबराने की क्या बात? आप लोग तो कुछ समझते ही नहीं है ना. परिमल भैया ठहरे बॉटनी के प्रोफेसर. और मुझे बॉटनी का बी तक नहीं आता. He's gonna play as Primo. जिसे मैं भाभी कहकर बुलाता हूँ, उसका नाम लेकर कैसे बुलाऊं? तुम्हें कुछ याद नहीं रहता. परिमल और सुलेखा वहां नहीं हो तो भाग गए. अरे कुछ दिन की बात ही निकल जाती है. But he's in love. Remember, he actually is fond of the friend's girl, like sister-in-law or something. Oh, like that's right. That's right. So if he invites her over, he's going to be pining after her, and it's going to be the yeah. same thing that he's going to run. Maybe. Yeah. I mean, because right, that's who he likes. Is his some sort of relative of his. आराम रहा ना. वो रह रहा. आई आई. He looks so stiff. So He's stiff. very stiff. घर में सब ठीक It's है? like the pants are kind of like have bell bottoms on. Yep. Oh, this is the bell bottom era. उसे मालूम था कि मैं आने वाला हूँ, बाहर चली गई. कब गई? कब?
आज ही सुबह। आज सुबह अकेले गई? नहीं नहीं, अकेले नहीं, साथ में वो है ना, वो प्यारे मोहन। ये वही प्यारे मोहन है ना जो हमारी शादी में आगे आगे घूम रहा था, सुलेखा के साथ बहुत घुल मिल गया था। Yeah. मैं आज दोपहर की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ। अरे अरे परिमल, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो वापस चलो। मैं तुमको इस तरह जाने नहीं दूंगा, तुमको मेरे साथ घर चलना होगा। क्यों भाई साहब? जैसे तुम ठीक समझो। Oh man, he's so sad. ये सब क्या हो गया राघव? सब आप ही की मेहरबानी है। घर चलिए, बताता हूँ। चलो। Wow, he is good too because he knows everything going on. Yeah. Like, wow, that was believable. मैं कौन हूँ? प्रशांत भैया। मैं तुम्हारा जिगरी दोस्त हूँ। तुम्हारी बीवी आज ड्राइवर के साथ भाग गई है ना? मेरी बीवी? परिमल की बीवी। अरे भाई, अब तुम परिमल हो ना यार। ओ हाँ। Oh, he's not so good at this, is he? तुम्हारी बीवी आज ही भाग गई है और तुम खुश हो? हैं? हंस रहे हो? है। सॉरी सॉरी। ऐसे मुंह लटका के रहो। अब मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी और साली के पास जाकर थोड़ा सा सिंपैथेटिक एटमॉस्फेयर यानी हमदर्दी का वातावरण बनाता हूँ। मतलब ये कि वो मुझसे पूछेंगी, परिमल जी यहाँ क्यों आए हैं? मैं उनसे कहूंगा, बेचारे की बीवी आज भाग गई। सब औरतें ऐसा करेंगी। He's actually kind of liking this fun too. Of course he is. Yeah, he's really. अरे दरबान, गाड़ी में से सामान निकालो। ये क्या, परिमल आया नहीं? वो प्रशांत के घर चला गया। अब तो सुलेखा को ढूंढने का कोई बंदोबस्त करो। क्या पुलिस में खबर करूं? नहीं, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तो चुपचाप बैठ जाओ, आगे आगे देखो क्या होता है। A whole reputation. What is society gonna Oh, say? this is the one I think he likes. अरे ये क्या कर रही हैं आप? Oh yeah. Yup. मेरे जीजा जी के दोस्त हैं। जीजा जी? कौन जीजा जी? प्रशांत बाबू मेरे जीजा जी हैं। ओ हाँ, प्रशांत। क्या करती हैं आप? कॉलेज में पढ़ती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। सब्जेक्ट क्या है आपके? Oh, he is in it now. आप मुझे पढ़ाएंगे ना? हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, बॉटनी है ना। It's like, where's the first botany book I can find? क्या हुआ? ओह प्रशांत भैया, मैं किसी होटल में जाके नहीं रह सकता? क्यों? आपकी वो साली बॉटनी पढ़ती है। बेटा, मैंने सब सुन लिया। क्या पढ़ती हैं आप? कौन से सब्जेक्ट्स हैं? ये सब पूछने की क्या जरूरत थी? तुमसे कहा नहीं था कि मुंह लटका के बैठे रहो चुपचाप? आओ। परिमल, ये है मेरी धर्म पत्नी। आप मेरे यहाँ पहली बार आए हैं। आपको कभी मुंह लटका कर बैठने नहीं दूंगी। देखिए आप लोग तो समझते ही नहीं है ना, मुंह लटका के ना बैठने से सब गलत समझ लेते हैं। He's अभी अभी एक मुसीबत हो गई थी। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। तुम जरा परिमल के लिए चाय लेकर आओ। And what are you doing, dude? इतनी जल्दी बन गई चाय? तो आप मुझे बॉटनी पढ़ाएंगे ना? हाँ जरूर जरूर। आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं ना? तो जीजा जी ने आते ही आपको सब कुछ बता दिया। लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं आपको बोर नहीं करूंगी। no, let's sing about botany. गाना तो सुनाना ही पड़ेगा आपको। सुनाऊंगी। अगर आप मुझे बॉटनी पढ़ाएंगे तो। Oh, she's gonna barter. सूरत लड़की को बॉटनी नहीं लिटरेचर लेना चाहिए था। बॉटनी मुश्किल जरूर है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और लिटरेचर मुश्किल भी नहीं है, इंटरेस्टिंग भी। He's like, please, let's talk about literature. बॉटनी पर लिखते हैं और वकालत लिटरेचर की कर रहे हैं। बस यूं समझ लीजिए कि all that glitters is not gold. मैं समझ गई। आप मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए बहाना ढूंढ। Oh. परिमल के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा बुझाकर यहाँ भेज दूंगा। ना, अगर वो यहाँ आया तो मैं तुम्हारे घर भाग जाऊंगा। सुलेखा जब तक वापस नहीं आती उसे वहीं रहने दो। अगर सुलेखा वापस ही ना आई तो? वो जरूर वापस आएंगी। प्यारे मोहन जो साथ गया अरे है। फिर उस लोग के पठे का नाम ले लिया। Don't mention him. उसे ज्यादा बेचारा मत कहिए। मैंने उस जैसा दूसरा बदमाश नहीं देखा जिंदगी में। They have a risk of like seriously tarnishing any relationship he's ever gonna have with him. मुझे बॉटनी पढ़ा दीजिए। मुझे ये बताइए, करोला का फंक्शन क्या है? Uh-oh. करोला। No, he's Cor- Corella as opposed to Corona. करोला खाने में कड़वा होता है और लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप तो मजाक कर रहे हैं। मैं आपसे करोला के बारे में पूछ रही हूँ, आप करेला के बारे में बता रहे हैं। करोला। And not the car in this day and age, not the car. देखिए,
मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही हूँ ना? Oh, no, no, no. Not at all, not at all. It's an awkward position for him to be in because he really likes her, but at the same time he's like, girl, I am not going to help you at all here. अच्छा परिमल, जरा चलो चोपड़ा साहब से मिल के आना। न जाने सुलेखा जी क्यों? Oh, wow, they're all hanging out in the back together. लाख कोशिश की कि वो कोरोना छोड़ किसी तरह जूलियस सीजर की बात करे, लेकिन नहीं साहब। शेक्सपियर मर गया, लेकिन वसुधा के हाथ से कोरोना नहीं छूटा। बड़े भैया, उधर क्या हाल है इनके जीनियस जिज्जा जी का? बहुत बुरा हाल है। बॉटनी की एक किताब खरीदो, रात भर पूरे चैप्टर को रट्टा लगाओ और जाते ही सुबह जाके सुनाओ और फिर छा जाओ। I don't think it's that easy, no? Good idea. Oh, how funny. When he did that, he looked just like one of my friends, Krishna. So he's gonna memorize it? Might as well just become a botany professor at that point. Well, if he's an English major, he might have a bit of, they can read a lot of things and absorb a lot of information. Oh. So we'll see. He's going to sing it? Did he come up with a mnemonic? A song mnemonic? That'd be fun. Corolla, Corolla. The corolla is composed of a number of thin units, the petals usually white or bright or of a more or less tubular ये तो मैंने bell-shaped. कल रात को पढ़ लिया है। Yes? Oh no. He's like, that's the only thing I focused on. मुझे ये बताइए कि गेंदे का फूल फूल होकर फूल क्यों नहीं है? Because it's multiple flowers, right? We learned that already. गोभी का फूल फूल होकर के भी फूल नहीं समझी, इसी तरह गेंदे का फूल फूल होकर आप के भी। बहुत मजाक करते हैं। उस दिन करोला को करेला बना दिया और आज गेंदे के फूल को गोभी का फूल बना रहे हैं। नमस्ते जिया जी। नमस्ते। बैठिए कैसे हैं आप? मैं अच्छा ही हूँ बेटे। He looks so happy for his wife to be gone. अच्छा आपका क्या ख्याल है, कहाँ गई होगी? क्या कहूँ, कुछ कहकर तो गई नहीं। कह के कैसे जाती, जब प्यारे मोहन के साथ गई है तो। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात नहीं है जीजा जी, शादी के पहले से वो प्यारे मोहन को जानती है, ये बात आप नहीं जानते थे? नहीं जानते थे। मैं अगर पहले जानता होता तो उसे कभी शादी नहीं करता। Oh. वसुधा बड़ी अच्छी लड़की जीजा जी, लाखों में एक। अच्छा नमस्ते, वो मेरा Yes, इंतजार कर रही it's होगी। happening. Now he's like, oh no. Oh no. He's like, these modern times are killing me. Yeah, he's like, I don't know these kids anymore. Like, Now where is he? मैं मानता हूँ कि गलती अपनी लड़की की है, मगर उस आदमी के चेहरे से पता नहीं चलता कि उसे भी कुछ दुख हुआ है। क्या कहा उसने? कहा कुछ नहीं, कहते कहते रुक गया, मगर भैया हम भी शब्द सुनकर मतलब समझ जाते हैं। लगता है कि उस घर में कोई There's something brewing up there. well, they're 100%. वसुधा को पढ़ाते पढ़ाते With the eyebrows. Those very good, those eyebrows. बॉटनी क्या है? बड़ी आसान चीज है, कभी जी नहीं, आसान आपके लिए है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अरे यही देखिए ना, गोल आलू को कहते हैं मॉडिफाइड स्टेम और मीठे आलू को कहते हैं मॉडिफाइड रूट। Oh man. दरअसल ये बड़ी डीप रूटेड फिलॉसफी है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने पहली बार सुना है। Oh really? Oh, really? You know what's odd is that she wants to study so much outside of school and she's going to school for botany. It's like, परिमल भैया को देख के तो पता नहीं लगता कि उनकी पत्नी भाग गई। जिस तरह वसुधा को लेके बाग में घूमते फिरते रहते हैं, मुझे वो भी पसंद नहीं। अरे भाई, बॉटनी कमरे में बैठकर नहीं सिखाई जाती, फूल पत्तियों में सिखाई जाती। it's true. Why he won't let his wife in on it, I don't know. Right. Well, he sees how much fun they're having with the Jijajis, so then Yeah. he may be thinking, oh, it'd be fun if I could fool my wife too, maybe? I don't know. But she should be in on it because that's not quite right what he's doing with her. तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती वसुधा। लेकिन सुलेखा दीदी की भी तो कोई मजबूरी होगी। सुलेखा दीदी के लिए प्यार है तुम्हें, लेकिन मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं ना। अगर आपको सुलेखा दीदी के बारे में कुछ कहना है तो मुझसे नहीं, दीदी से बात कीजिए। और तुम्हारे बारे में बात करनी हो तो? That look on her face. तुम्हारे बारे में जो मैं दिन रात सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, वो तो मैं तुम्हीं से कह सकता हूँ ना। That was so quick. Oh मुझे my आपकी gosh. बातें बिल्कुल Oh अच्छी नहीं no. लगती। मत भूलिए सुलेखा दीदी मेरी बहन जैसी है। मेरी भी तो, मेरा मतलब मेरी जो भी हो।
He's so bad at this. He's terrible. Every single sentence he slips. ड्रामा जम रहा है ना? अरे ऐसा जम रहा है जैसे दही. What is the big plan, though? Like, the big reveal? आइए परिमल बाबू. मजाक मत कीजिए भैया. मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूँ. मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बन के नहीं तुम बन के. और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है मैं कह रहा हूँ. इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार के दिल की बात कहना चाहता हूँ तो वो समझती है कि परिमल जो कम्बख्त शादीशुदा है. परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है. इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस. He's really getting his love blocked by this whole thing. नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात. नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं. What? मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा. He's not even getting paid for this. हाँ सब कुछ बता दूंगा. तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और आप भी कौन है. मैं तो प्रशांति हूँ. तो बताने में क्या है, बताने में क्या है. और सेफ्टी सेक मैं तो वो भी बता दूंगा. Just क्लाइमेक्स पे पहुंचाकर ड्रामे की छुट्टी मत कराओ. सुनो कुमार जी. We've been building this up for a month. तो रिवॉर्ड तो जरूर मिल जाएगा और जब क्लाइमेक्स की गुत्थी खुलेगी तो वसुधा अपने आप समझ जाएगी. True. समझ आएगी. हाँ. Except she probably won't like that you've been fooling her. It's like, okay, all right, I can do this. I can do this. Maybe I can do this. शादी के बाद किसी दूसरी लड़की से प्यार जताना क्या शरीफों का काम है? वसुधा जी. She understood perfectly. जब तक सुलेखा दीदी यहाँ ना आए, आप मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिएगा. Wow, she's got, you know, she's sticks to her values. केस तो बहुत खराब होता जा रहा है. फिर फाड़ना फोड़ना पड़ेगा. जी? ये बैठी. I'm so confused. He's lost it. सुलेखा दीदी का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूँ. आप उन्हें दीदी कह रहे हैं? Didi. हाँ भी कहना चाहिए मुझे. क्योंकि प्रोफेसर त्रिपाठी मेरे बड़े भाई जैसे हैं. प्रोफेसर त्रिपाठी? हाँ, प्रोफेसर त्रिपाठी और प्यारे मोहन जो अपनी बीवी यानी वाइफ सुलेखा जी के साथ भाग गए. I'm glad he let her in. मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ. सुकुमार सिन्हा बॉटनी का बी भी नहीं जानता. मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप वसुधा हैं और आपकी और मेरी दोनों की शादी नहीं हुई अभी तक. And he's like, and you're pretty, and I'm kind of handsome. So, what do you say? मैं तो सोच रही थी प्रोफेसर त्रिपाठी बहुत ही सीरियस आदमी होंगे, लेकिन वो तो बड़े रसिक निकले. He is quite. सीरियस हो जाता है ये कैसे? Don't let wifey hear. Uh-oh. मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ. इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया. अब ये फूल बना दो तुम्हें. Dun. अब क्या होगा? दीदी को शक हो गया है. चलो कहीं भाग चले यहाँ से. I guess they let her in too because ultimately they're not trying to prank her. कहाँ गई थी? एग्रीकल्चर फार्म. इतनी देर तक क्या कर रही थी वहाँ? बोटनी पढ़ रही थी. ये अंगूठी किसकी है? साथ में मिली. You just found it? उन्होंने दी. उन्होंने किसने? जीजा जी के दोस्त है ना? उन्होंने. Oh. ये क्यों लिखा है इस पे? हाँ दीदी वो मेरा नाम है ना, वसुधा. VASUD. As opposed to. अरे करमजली इतना भी नहीं समझती. वो है सुलेखा का एस है. अरे सुलेखा को क्यों बीच में ला रही हैं आप? उसका मेरे साथ क्या संबंध? वो तो चली गई उसके साथ जिसके साथ उसका संबंध था. अब तो बस एक ही पवित्र बंधन है, वसुधा और मेरा. आप मेरे यहाँ से निकल जाइए, इसी वक्त निकल जाइए. आशीर्वाद देकर हमें भेजिए तो अच्छा रहेगा. क्यों सुधी? आप कहती तो हम चले जाते हैं. आप लोग तो कुछ समझते नहीं है ना. जल्दी से एक चिट्ठी लिख. जल्दी लिख. जैसा मैं बोलता हूँ वैसा लिख. बहन जी, आज क्या क्या बनाऊं? Oh no. हाँ, ला. She's now in on it and she loves it. अरे तू उसकी फिक्र मत कर. उसका सीन लिखा जा रहा है. मैं संभाल लूंगा. तू जा. They're in this scene so many people. This shows you how bored everyone is with their lives. Regular lives, yeah. That they're It's like, just like- let's create a whole bunch of crazy drama. Their regular lives must be very boring.
हो गया है कि बहुत जाती हो रही है। न जाने दीदी पर क्या गुजर रही होगी। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अब लोगों को अपनी बहनों की बहुत फिक्र है। पूज्य जीजा जी पे किसी को तरस नहीं आता। How he says it like that, it's like, it gets her every time. तुम जाके वसुधा और सुकुमार यानी वसुधा और परिमल की खबर दोगे जीजा जी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं लता को भेज दूंगा, बड़ी जेन्युइन लगेगी। तुम सुलेखा को लेकर आरे कॉलोनी जाओ, मैं किसी बहाने जेम्स को वहां भेजूंगा और फिर जेम्स तुम्हें जीजा जी के सामने पेश करेगा। Okay, we're getting close. Yeah, the final show. किसे ढूंढ रहे हैं आप? एक साला ड्राइवर को, वो साला मालिक की थाली को भगा लाया, बहुत बदमाश आयो। अगर मिल जाए तो साले का रस निकलूंगा। Is he not? जेंटलमैन बनता है, आपने चका क्यों मटा? Oh. अरे भाई आँख खोल के तो बात करो। अब अगर आप माफ नहीं करेंगे तो हम आँख नहीं खोलेंगे। अच्छा बाबा माफ कर दिया, अब आँख तो खोलो। माफ कर दिया? हाँ। नमस्ते। If he would have just, he's a drinker though, right? Yeah. So he's a little, he probably should not be a driver. माँ मेरी गोद में डाल के गई थी वसुधा को, उसे देखना, उसे संभालना। तो फिर उसे गोद ही में रहने देना था, सब चाहने की क्या जरूरत थी? Blame and drama. हमने कहा था हम ठीक समय पर पहुंचेंगे। Oh, he's gonna get slapped. तू कहाँ गई थी इतने दिन? वो कहानी आप बाद में सुनी, पहले से मंदिर ले चलिए। मंदिर क्यों? परिमल शादी कर रहा है। वसुधा के साथ। It's going to be a marriage at the temple. चलो चलो जल्दी करो राघव। साहब, कौन सी गाड़ी निकालो? फिएट या मर्सिडीज? The Mercedes, of course, Mercedes. Everyone can... खबरदार जो गाड़ी को आग लगाया तो निकल जाओ निकल जाओ। It's like, you're not my driver anymore. नहीं रहेंगे तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाऊंगी। सुलेखा ठीक कह रही है, इसे भी ले चलो। अच्छा चलो चलो चलो। इसे पहन लीजिए। I'd rather you wear it. विवाह संपन्न हुआ। चलो भाई, शादी हो गई, शादी हो गई। Congratulations, congratulations. Wow, and like for real, for real. मुझे तो मालूम था कि शुभ अवसर पर आप आ ही जाएंगे। शादी तो हो भी चुकी। हो चुकी है. Sorry, too late. अबे तू कहाँ खिसक रहा है? मैंने क्या किया? Oh no, poor guy. अब उल्टे फेरे करा, तुझे शादी उतारनी पड़ेगी। हैं? अरे ये क्या कह रहे हैं बड़े भैया? ये कोई भूत है जो उतर जाएगा? सारी गड़बड़ इस प्यारे मोहन की वजह से हुई है। इसे आप कुछ नहीं कह रहे। इस रात के लिए बेड़ा गर्क किया था। He's the one he got to slap. प्रशांत ने बिल्कुल ठीक कहा है। पहले हम तुम्हारी मरम्मत करेंगे, फिर इससे बात करेंगे। मेरे प्यारे को रहने दीजिए। Oh. सुलेखा, तू हट जा। हट जा, निकल जा। प्रशांत, हाँ जी, फिर से ले जाओ। प्यारे मोहन, हाँ जी, तुझे आज मरना ही पड़ेगा। क्योंकि परिमल को जीना है, समझे? जीजा जी का हाथ होने चाहिए। अवश्य, तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों से होगी। कान से? सुलेखा से शादी करने से। ये आप क्या कह रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए? असली परिमल है ये। He got it. All right, you got it. और नकली वो। मैं हूँ सुकुमार सिन्हा और ये है वसुधा और हम दोनों की शादी हो चुकी है। I mean, yeah, really quick on the fly. बाहर होता है तो शायद कह देता कि जानता था, मगर मंदिर में खड़े होकर झूठ कैसे बोल? बैठ के बोल दीजिए। हाँ चुप रहे, बात उल्लू बनाया तूने पहले ही हमारा। जीजा जी, दीदी, माफी चाहता हूँ। सचमुच मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ। क्यों जीजा जी? आप तो सूख के आदमी पहचान लेते थे ना? सूंघ ही लेता बेटा, मगर जुकाम जरा लंबा हो गया था। Oh, okay. इस उम्र में जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई, मगर आप जनता जनार्दन है, बाहर जाकर किसी से मत कहिएगा कि मैं उल्लू बन गया। नमस्ते।
So that was a lot of build-up for a very quick payoff. Yeah. I mean, how many days, how many weeks did they build up to this final like show? about 10 days. And then they laughed more during it than the actual reveal, because the reveal happened in like the very last 5 minutes of the movie. Not even 5 minutes. It was like, really, it happened within the last 2.5, 3. Yeah, so it was like, I was expecting at least something, like maybe somebody was going to have an issue with it and then be hurt, and then they had to all apologize in some way. Or they'd get back at him or something. I don't know. I thought there was going to be like maybe a second, like on the second half, is that he would have found out, but then he was going to play along and then make like some trouble for him on the other side. True. So that it would be barabar, like equal, because he created. So I thought second half was going to be that Jijaji would find out and then play a joke on him. But it was like this joke went through. I mean, it went on and on. This is what you call when you see it's like snowballing, right? Yeah. Because it's like one led to another, led to another. Yeah. I loved the imagery of how they always went back. They cut the cut scene back to that same couch, and it started getting more and more and more people on the couch just getting in on this joke. Like, more of the conscripted, hoax and in on the laugh and the joke, and it was fun. It was fun. So this is your first movie where you've seen Dharmendra in a lead role, because you've seen him in like little cameos here and there, and he had like a side part in some other movies, but here you see him as like a really like the lead of the movie. So what did you think? I thought he was a very dynamic character, particularly for this one. So a dynamic character played by a really good actor, and he pulled it off really, really well. And I like the fact that he was speaking lots of different languages, and I was able to understand and be in on the jokes. I didn't have to understand every single word. I got the gist of it, and he did it in such a way with body language and other acting ability that made me understand. He's being funny right now. He's making fun, or he's being satirical, or he's being a little mocking, or other things like this. So that said a whole lot to me in terms of his acting ability, and you really could see how people would say, "Oh man, this guy's really good." So, and again, he's a good-looking guy, and he definitely could make the women swoon. I had a whole bus that he knew that girls probably would go after him. So, right away, it's got to put on the hat, and, I'm just the caretaker, man. He did that so the guy wouldn't lose his job. Well, yes. Because the auntie who was like leading the bus trip, she probably would have been one to say, I'm speaking to the manager, who's the boss of this place, I'm going to get this guy fired. Right? So, but also he definitely put up that wall though with all the cute girls and stuff. Like, no, he's an old man, you don't want him. It was funny. So for him, a lot of the comedy, though, it was interesting how they tried to put it in subtitles, because the whole thing was like language based, which English doesn't have a lot of the things that Hindi does. So I was like looking at the subtitles and back and forth between what he was saying, because I was like, how would you say that in English versus what in Hindi they have for here, and there? So and it was interesting. So there was that here, and here, and things like that. But then also, for example, when Amitabh Bachchan was trying to say, I'm who and all that sort of stuff. I'm Hugh, but you're me, and I'm mime, and all that sort of stuff. Subtitles just became, honestly, kind of trash. But I got it. I got it because, again, I had enough of the pronouns that I've heard before and understood how he was trying, and how he was very confused on who he was again. So I was like, that was pretty impressive. And again, it was a joke, and it was how the language is structured and so forth. And that came up several times particularly when he was trying to say sister-in-law and so forth, and all of that, and friend of this and so forth, and he kept forgetting who his role was, so he didn't know how to address her and so forth, and I was like going, I get that. And so even Amitabh Bachchan was doing a great acting job of getting that across
to me as well, and I'm like going, okay, I could see how. Well, you that would also be- know more about the language too than the average person, because if someone is watching this with subtitles and they're like, what do they mean about the you thing? Yeah. Because, you know, in Hindi you have the different levels of you, which one you're using, but in English it's just like you, and it's like, what? You'd like say you to a child, but then the same you to like your elder? Yeah. So you get some of those jokes, but then some I was just like, oh, that didn't make sense. Like what the subtitles were saying. But and there were lots of times that the subtitles were off, and I knew that they were off, but I was again able to just flow along with it. Yeah. You've seen enough movies. Yeah. So also Asrani, this is the earliest you've ever seen him, because you haven't seen his jailer role. So Asrani, did you recognize him? I mean, the movie you saw him in was Dhamal, where he was the dad that was slapping the son a lot. So you don't know. I mean, he looks very different here because he has lots of hair and, well, he was wearing he was wearing glasses in Dhamal too. No? We've seen Asrani in other movies too, but they were mostly later movies, so he was like kind of older. Here he was very young. He was the friend of the professor. Okay. So he was the botany, Dharemendra's friend, right? Okay. So with the glasses, and then Amitabh Bachchan was staying at his house. Yes. Yeah. Okay. Yeah. So that was Asrani, and he looks very different. And even in the jailer in Sholay, he looks very different too. So he is, you know, good comedy style too. There's a reason. I mean, he's like did so well too for himself through this like a whole era of him in all these different comedies. Yeah. So. All around very good. The whole Jaya Bachchan, you know, because this is her second, because she was also opposite him in Sholay too. So actually Sholay, this is a lot of actors. We have Asrani, we have Amitabh Bachchan, we have Jaya Bachchan, we have Dharmendra, and, you know, so all of them were in Sholay and they were all here too. So it was, you know, you got that magic together. Yeah. So I thought I thought the movie was very good, very funny, entertaining. The time went by pretty quickly. I thought this was just a very clever thing that this could also work in a modern era too. Yes. Yes. And I think you could put a little bit modern twist. This is one movie. Normally, I don't like to think of like movies getting like remade and stuff like that. But I would just the whole time I was watching this, I was thinking about how things were dated because they were using letters and stuff like that. So in my head while watching this, I was like, how would you translate this to like a modern story? And that actually occurred to me a couple of times when you asked what's a trunk line and a trunk call. Like a trunk. I've never heard of that. You know, like long distance, we call it like long distance. It's or like not even long collect. distance. We don't. I mean, we don't even think of long distance anymore. It's like just call. Yeah, it's just call. I mean, literally. And it sounds like they're right there. Yeah. So, yeah. I mean, even video calls now. Exactly. So that and texting, you could do things with texting nowadays, and you know, and a lot of. I think there could be a lot of fun done in a more modern version and so forth. You know, you could do. I mean, social media could come into play as well. You know, like pictures. But then taken they'd be at a like party. stalking there, so you'd have to create a whole nother account, like start swapping your photos and stuff. Man, like it'd go deep. But anyway, I thought it was a fun movie. And it was entertaining, and you know, so I'm going to give it an 8.5. I'm going to give it an 8 as well. I thought it was really quite good. I like the story. I like the premise. And again, like I said, I was very impressed with the acting to be able to convey a lot of things that, weren't conveyable via subtitles. Although they translated it well, I got it, and the undertone to a lot of things. So, how about that girl though? Their daughter. Oh, so the daughter daughter in the car, and her just like licking the window. I was like, oh man, you know, she's a scarred child actor for life. That was my favorite. Honestly, though, that was my favorite moment. Not just in this movie, but like my cinema experience in a very long time. I don't know. Honestly, I was trying to hold back the giggles because for the next like 2 scenes after that, she never got her ice cream. No, she never got her ice cream, and that's probably why she told on them. Probably, I would. My gosh, like for the next couple scenes, I was like, don't think about her, don't think about the girl. I'm just gonna randomly laugh. She was playing in the bed. Yes, I remember. was like going,
Something gonna happen here with the little girl too. She's just pouting because she didn't get her ice cream. She hasn't said a word since. Yeah. So, oh my gosh, great shout out to her. Yep. And just the decision too, like direction decision. I don't know whose ever decision that was to put her in the middle, like cut away to her in the window. That was like... That was priceless. That was priceless. Oh my gosh. Like I'm actually... Just because of her... There should be a meme. She could be a meme. I tell you, she could. She could. I didn't even get my ice cream. You know, just like cut away. I didn't even get my ice cream. That's what it is. That's what I'm gonna make that. And it's like I didn't even get my ice cream. Anyway, this was such a fun movie. Thank you for the recommendation. But we also have to show you his action prowess too. Why they call him He-Man. Here you know why they call him Garam Daram, because you know he has that smile, he has the looks, he's got the hair, he's got everything, right? So now you need to know why they call him He-Man. So we need to find a movie that you can see him doing an action part, because he does it, you know, and this is going back to like the Angry Men days, you know, and so. But anyway, it's going to be interesting. We'll have to look around. Yeah. All right. Thank you so much for joining us. And if you did like these videos and you want to see more, then please consider subscribing, sharing, a like button part of tomorrow.